हाँ जी विवेक सर, ऐसे है कि हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी नेक्स्ट हियरिंग्स होंगी उनको अप्रोप्रिएटली हैंडल करना या आप रिप्रेजेंट करना, वो हम ड्यूटी जो है वो आपको देते हैं। तो उसकी आप प्लीज हमारी तरफ से विद फोल्डेड हैंड हम आपको नहीं सर, चलो एनी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हाँ जी सर, I team here since long and then after ये केस मुझे अभी ही थोड़े दिन पहले ही पता लगा है कि ये प्रॉब्लम नहीं थी कागज देखने। yes, बिल्कुल। और शॉर्टली मैंने कुछ नहीं किसी से, मैंने 2 मिनट देखे और मैं समझ गया कि यहाँ पर हमारी कमजोरी क्या है। तो ये केस 2011 से चल रहा है, 2011 से लेके आज तक चल रहा है, 2026 चल रहा है। मतलब तकरीबन कितने साल हो गए सर? ये हो गए थोड़े 25 साल हो गए, सॉरी 15 साल हो गए, 15 साल। लेकिन जब हमने ये नया अभी एफिडेविट फाइल कर दिया है तो उसके बाद ये जो पुरानी टीम आपके साथ ये लगी हुई थी, देखो एडवोकेट्स के अंदर भी अपने आपके लीगल जो फ्रेंड्स हैं उनकी अपनी जिम्मेदारियां उस केस के साथ अटैच है। नाउ एट दिस स्टेज ऑल आई कैन से इज आई विल इंश्योर दैट ये जो आपकी एग्जिस्टिंग लीगल टीम है उनको मैं इस तरीके से ब्रीफ करूं, कोऑर्डिनेट करूं कि सो दैट ये हमारा जो अभी हमने एफिडेविट फाइल किया है इससे मतलब हमें कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट कर सके। तो वो एनवायरनमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रेजेंटेशन है ऑफ द केस है, वी विल इंश्योर दैट एटलीस्ट आई कैन इंश्योर दैट द टीम हूएवर वेदर द एओआर वांट्स टू डू इट, और कल को कहते हैं कि हमें कोई प्रो बोनो सीनियर काउंसिल मिल जाता है इतने सालों से केस चल रहा है। मेरे हिसाब से उस टीम को जिसने भी जितनी फीस ली है आपसे, मुझे नहीं पता कितनी ली है, उनको चाहिए कि ये जो आर्गुमेंट है ये शुड बी लाइक ए प्रो बोनो होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे चंडीगढ़ में कौन सी भी डेट फिक्स होती है, कभी भी डिस्कशन होता है, समझाने की बात होती है, भारद्वाज सर आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है। हम इस चीज को ये अभी केस आपका पकड़ लिया हाथ में, एफिडेविट मैंने खुद बनाया हुआ है तो इसलिए आई नो एवरी वर्ड ऑफ इट। आई विल बी एबल टू इम्प्रेस अपॉन द लीगल टीम देयर एंड पुश द केस एज मच बेस्ट एज वी कैन डू। एंड अगेन माय लॉर्ड्स हैव टू गिव द जस्टिस एंड आई एम श्योर विद द काइंड ऑफ हार्ड वर्क यू ऑल हैव डन, ठीक है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज़ जजमेंट तो जज साहब ने देनी है, हमारा काम है आवाज उठाना। वहां पर ये जो प्रेजेंटेशन है दैट शुड बी एक्यूरेट एंड the accuracy will be already we are given a affidavit, everything is there, the whole record of your case is there, but yes, this is the additional fact. So moment you handle this additional fact, I mean section 11 of 64 and para 18 of it, the whole उसकी निचोड़ की इसमें आ जाएगा, इसका निचोड़ सब इसमें आएगा, the legal proposition changes, the legal proposition of the whole case changes. So we are going to बात खत्म होगी, तो सीधी सी बात है, वो कहेंगे जी देखो आप ये अभी हम मांग नहीं रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि भाई आपने ये देना था, एक ही पॉलिसी देनी थी, there cannot be differentiation in policy. Shaba sir, I just want to tell you, ये जो हमारा लीगल नोटिस है, this was also for the ECHS case also. अरे विवेक सर, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट कह सकते हैं या इंक्वायरी है कि फर्ज किया कि इस केस में ये एफिडेविट देने के बाद भी अगर हम सक्सेसफुल नहीं होता हमारा केस, तो जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है हमारा, वो क्या हमें लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में या कहीं और किसी स्टेज के ऊपर हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए? डायरेक्टर ECHS को हमने एक नोटिस, लीगल नोटिस भेजा है और साथ में सेक्रेटरी DSW को एक हमने ECHS का ऐसा था सर। ये केस अभी फ्रेश है जो आपने ये सुप्रीम कोर्ट वाला दिया है, लेकिन इससे पहले हमारा एक डिस्कशन हो चुका है। अच्छा, मेरा मानना ये है कि सर ये हमारी जो स्कीम है, ये हमारी जो स्कीम है ECHS की स्कीम, ये वेलफेयर ओरिएंटेड है, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है सभी लोगों, राइट? सो
इसमें जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो इट इज समथिंग लाइक एन एनी insurance schemes or any ECH medical schemes which are taking privately also. But when this scheme was created, इसके अंदर जो इसकी body है, वो उसको कहते हैं is a quasi government system. It's not a clear government system like pensions, right? So it is also something like your LIC policies, your medical facilities from any other insurance systems. Therefore, this ECHS scheme also falls in the jurisdiction of the consumer forums also. So if any deficiency of the services there, by virtue of its policy or by virtue of its treatment or by virtue of the services being given under this scheme, it also falls under consumer forum. Therefore, we were contemplating, we were discussing that if the justice is not given, let us say, because all this time now we are thinking it is totally a government scheme, right? But it is, if you read it, it is not like that. So it certainly falls into the category of the consumer forum, and should there be requirement, we will definitely, we can, since legal notice has already been issued against this particular scheme, because the consumer forum also says, have you exhausted your legal remedies? Yes. The already existing legal remedies. So we have already issued a legal notice on purely on ECHS scheme. So keeping that in view, we will then thereafter will move to the ECHS forums. It can be at a state level, it can be at a national level. So after all, see, when we see there is a disconnect, there is a difference. See, the biggest lacuna is that we have paid 1,20,000 like the other regular officers. So I have a feeling that we have to keep the pressure on, and officers must also participate, because till the time somebody doesn't, Punjabi कहते हैं ना, अगर बचा रोएगा नहीं तो पिएगा. So you have to actually, it is unfortunate that instead of anyone agitating unnecessarily, people are putting everybody so much of pressure on these veterans. It's not very fair. The policy makers must make, they must see the ground realities. One feels very sorry that when a veteran will go in a hospital, how will he feel? How bad he will feel that he has to, one side he is fighting his own disease and treatment, and the other side he is worried about कि मैं कितना को पैसा मेरे वापस मिलना है क्या भाई? पहले तो जाके थोड़ी एक क्वेश्चन तो ये है कि फर्स्ट पे कहाँ से करें? एनीबॉडी कांट पे. और पेंशन, अभी आप पेंशन दे रहे हो उसको, और ना उसको आप ना पेंशन दे रहे हो, और फिर कहते हो कि कैशलेस. इट्स ए क्रिमिनल whosoever has made a policy. इसके ऊपर बहुत इंक्वायरी होनी चाहिए. आई फील the person, the policy makers are lack in common sense, to be very frank with you. क्या देखो, बीमार होके देखो जरा यार, उसके बाद ये स्कीम लगा के देखो, किसी बीमार आदमी के ऊपर ये स्कीम लगा के देखो. ये बहुत ग्रेट रिलीफ होगा, स्पेशली दोज हु आर 80 and those who are suffering from some chronic diseases, just like me. I have got 100% blockage in my left artery, and doctors in America, they just refused to operate me. They said, let this patient remain on medicines only as long as he can do. तो मेरे को अगर मिल जाए तो मेरे को एक साइकोलॉजी इंश्योरेंस मिल सकता है कि if I have got some problem, तो I can go to any hospital without any worry, without any financial burden on my mind. 2019 से लेकर 2024 तक 1300 बंदों ने ही 10,000 में से अप्लाई किया है. In this Captain Bhardwaj's case in the Supreme Court, it's an admitted fact by the respondents.
I will not say the respondents here because they have appealed, so I will call them appellants. The appellants have admitted this one fact in their own rejoinder at para 8 that it is most respectfully submitted that the contents of para 9 are partially accepted only to the extent that ECOs were inducted to the phase of Chinese aggression in terms of 1962 as 9 as of 62 and short service commission officers were inducted in terms of SAI 11 as of 64 for a period of 5 years on contractual basis. Now, writing this contractual basis in itself is wrong. That's the only thing which we can debate. It is not contractual basis. Actually, under Army Act, Air Force Act, Naval Act, anyone who is made President Commission Officer or even a sepoy is not on contract. Right. The law itself, the basic law itself that you are in the Armed Forces Act, it's very clearly mentioned. That's okay. That's arguable. So this is, but only the fact is they have admitted that you have been inducted at 11 as of 64. This is an admitted fact. Now, once this is an admitted fact, that affidavit is going to change the whole now scenario. The whole, I will say, the argument in the Supreme Court will be totally changed now. सर आपका जो ECHS का केस है तो we just want to know how you are going to handle this case in the Supreme Court. You are going to मैं तो आप सबको दाद देता हूँ और आप सभी all these officers जिन्होंने इतने सालों से 2011 से ये अपील के जेल रहे और इस अपील के अंदर आज की तारीख में पूरा मैंने देखने के बाद आपके कागज देखने के बाद मैं एक ही नतीजे में पहुंचा हूं कि सबसे अच्छा है कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट उन्होंने खुद जो है यूनियन ऑफ इंडिया ने आपकी अपील अपने ही कागज के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि आपने कागज में लिखा है कि आर्म इंस्ट्रक्शन 11 एस ऑफ 64 राइट उन्होंने खुद एडमिट किया हुआ है लेकिन ये 11 ऑफ 64 पूरी इस फाइल के अंदर किसी ने ये लगाई नहीं तो जो अभी आपका ये भागवत सर ने ऑलरेडी हम लोगों ने एफिडेविट फाइल कर दिया है कहां पर कर दिया है इस सुप्रीम कोर्ट नाउ दिस एफिडेविट इज द पेपर ऑन विच द एंटायर डिस्कशन विल टेक प्लेस नाउ वेदर दिस मैडम क्या आपके उनका नाम चित्रंजन दास भी कर जाए आज भी कोई बड़ा काम नहीं है राइट बाय एनी एडवोकेट कैन डू इट बट इफ दे वांट टू वो कहते हैं आजकल वहां पर जब तक सीनियर काउंसिल को नहीं खड़ा करोगे तो मिलेगा नहीं सीनियर काउंसिल के लिए भी यही एक पेज 2 पेजेस के सिवा कुछ है ही नहीं टू डिस्कस वेदर yes it will be an honor for me to stand there in the Supreme Court whether I am given authority to communicate to the Honorable Supreme Court or I stand even along with the senior counsel. वो सिस्टम हमारे अगेंस्ट अपील कर रहा है उस अपील के अंदर वो वही सेक्शन को यूज कर रहा है जिसको हम यूज कर रहे हैं अभी डिफेंस के लिए अपने उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए और दोनों के लिए कॉमन फैक्ट एक ही चीज है सेक्शन पैरा 18 ऑफ द आर्मी सेक्शन ऑफ 11 ऑफ 64 वही चीज एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के लिए लिखी थी 9 एस ऑफ 62 के अंदर तो उन्होंने ये चीज लिखी हुई है except for pension under consideration order will be issued separately rest all terms and conditions especially in 11 as of 64 जो पैरा आपका 18 है उसमें लिखा हुआ है all terms and conditions are same जब same terms and conditions हैं तो how you can have two separate ECHS oblique medical policies and this will be a question which will be put to the honorable we will put across to the honorable court and I'm sure the judge will understand the real meaning of this particular arm instruction 11 of 64